Assalamu alaikum. I'm Dr. Zubair, consultant pulmonologist here, and today we will be discussing asthma. Asthma, as you know, is a very common condition, and we as pulmonologists see many patients, and I'm sure people from other specialties as well. They also come across asthma patient, whether in inpatient or outpatient, or whether the patient is admitted for surgery or other reason in the hospital as well. So, my talk will be mostly based on GINA guidelines. GINA is basically global initiative for asthma control. They publish guidelines on asthma each year after review of ongoing research about asthma, and they make changes almost each year in the recommendations. So I want this to be an interactive session. So if you can scan this QR code, and or you can go to slido.com and write Buch, you will be logged in. Okay, so what we are going to discuss today is we will be discussing what recent changes has been there in asthma treatment over last few years. We'll discuss treatment difference in treatment in adults and peds population, treatment of asthma in emergency and in pregnancy, and how to involve the patients in management of asthma. So there is a quick question for you if you can answer on your screens. Yes, sample size is small, only I think four people have joined. So, but out of those, okay, so more are coming. So, this is quite high actually, even higher than the actual prevalence. But still, so on average, 3 children in a classroom of 30 are likely to have asthma. 3%. Yes, but it is more prevalent in children, so children में ज़्यादा होता है, इस वजह से you can say in children it is around 10%, but in adults in UK and USA, the prevalence is around 8%. In Pakistan, there is a study which has shown prevalence around 4.3%. Yes. So it affects 300 million people globally and is the cause of 1,000 deaths per day. Okay, so what are the symptoms of asthma? If you can type in the symptoms. Okay, so these four are the main symptoms: cough, shortness of breath, difficulty breathing, dyspnea, all same, wheeze, and chest tightness as well. So what is asthma? Asthma is a heterogeneous disease, so there can be varied presentation. Some patient present with shortness of breath, some patient present with cough, and some patient will present with wheezing. But the main symptoms are these four, and patients will usually present with the different variations of these symptoms, or different combination of these symptoms. The main thing, how on the basis of history we will diagnose that the patient is asthmatic, is that there will be variation. Symptoms vary over time and in intensity together with variable expiratory airflow limitation. तो मेन जो चीज़ होती है ना उसमें वेरिएशन होती है. Patient will mostly say that they are perfectly fine on some day and on some days they are having severe symptoms. And और ये वेरिएशन डे टू डे भी है and it is season to season as well. So this is the only slide about pathogenesis. There is usually a trigger, something which is causing the symptoms, and the symptoms result as due to release of lymphocytes, and then there are various cytokines involved which cause different inflammatory cells to release these mediators which result in airflow obstruction. So main thing is there is airflow obstruction and there is bronchial hyperresponsiveness due to inflammation. So inflammation is involved
This why this slide is important, because if you only treat the symptom by bronchodilator, that will result in temporary relief only. But if you treat the underlying mechanism, the inflammation, then you will get long-term response. So keep in mind these interleukins, IgE. Now the focus of biological treatment, the Zumabs, umalizumab, rizilizumab, mepolizumab, they are focused on this inflammation कि inflammation को ख़त्म करें ताकि यहाँ तक पहुँचे ही ना. So two things are needed for diagnosis of asthma to be made: symptoms, variable symptom, and variable expiratory airflow limitation. जब आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, you can be very confident about asthma. Physical examination can be normal if a patient comes to you who has got the history of asthma, variable symptoms, but at that time the patient can be asymptomatic and you can have normal respiratory examination, or you can have bilateral V's. Otherwise, the respiratory system examination or the other system examination is usually normal. Patient can have signs of other comorbidities, like sometimes patient have allergic rhinitis, and some patients have some patients are obese, which is one of the phenotype of asthma. So moving on, how will you diagnose patient on the basis of spirometry, or how will you confirm that the patient has got airflow obstruction? There are usually two ways we can do this, but the preferable method is doing a spirometry. So spirometry is a test when the patient blows through this mouthpiece, and the machine calculates the flow of air. The two important parameters are FVC, which is the total volume of air that is exhaled forcefully through the mouthpiece, and FEV1. FEV1 is a part of FVC which is exhaled in the first second. So पहले second में जितना percentage या जितना air exhale होगी, that will be FEV1, and जो total है that is FVC. Its ratio is important. If the ratio is less than 0.7, then that means there is obstruction or limitation of airflow. और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट. Peak expiratory flow rate can be measured through spirometry as well as by this useful small portable device, which is cheaper as well. So although spirometry is the preferable method for diagnosis, but if it is not available due to any reason, this peak flow meter can help as well in documenting the airflow obstruction. And usually it is by age and gender. There are peak flow charts which can be used to calculate whether the patient is falling in the normal range or the peak flow is reduced. So when we have these information, how we will confirm? First thing is the ratio of FEV1 to FVC less than 0.7, that means that there is airflow limitation. But airflow limitation is present in other diseases as well. All the obstructive lung diseases like COPD, like in some cases of bronchiectasis, bronchiolitis, you will get airflow limitation. But the hallmark or the feature of asthma which will differentiate it from other diseases is variation or reversibility. So what we usually do is that we give them a bronchodilator after doing spirometry once and then repeat spirometry. If there is improvement in FEV1 of more than 12% and 200 ml, then that means that there is significant variability or reversibility is there. So that usually confirms the diagnosis of asthma. चिल्ड्रन में आपको सिर्फ अगर 12, चिल्ड्रन में ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, दिस इज़ फॉर एडल्ट्स. So if there is 12% improvement in FEV1 after giving bronchodilator, that means
देयर इज़ वेरिएशन एंड रिवर्सिबिलिटी. और अगर आपके पास स्पायरोमेट्री नहीं है, व्हेन देयर इज स्पायरोमेट्री इज नॉट अवेलेबल, यू कैन यूज द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर. उसमें 10% adults में and 13% in children. ओके, अगर अभी ज्वाइन किया हुआ है तो उस पर क्विज है, एक क्वेश्चन. नहीं आ रहा क्वेश्चन? अच्छा, क्विज में पहले नाम चेंज है रिसेंट. साल्ब्यूटामोल इज नो मोर रिकमेंडेड नाउ. सो विल डिस्कस इन डिटेल. So most of the people have said salbutamol with low dose steroid. Okay. But the correct answer is formoterol with low dose steroid. That is the preferable treatment option now for asthma treatment. Is for daily or just as needed? Sir, we will discuss it. So asthma control, जब हम कहते हैं तो what is the target when we diagnose someone with asthma? What are we targeting, or what is the goal of treatment? Is it only the symptom control? No, it is not symptom control. We need to reduce the risk of adverse outcome as well. Symptom patient को क्या है? Cough है, shortness of breath है. That is due to airflow limitation. But the research has shown that कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, they have got very mild symptoms, but suddenly they will get an exacerbation, and the number of exacerbation during 1 year will be significant, 3 or 4 or even higher. But in between exacerbation, they are usually very well. So symptom control is not the only goal of treatment of asthma. So we need to reduce the risk of exacerbation, protect lung function decline, and reduce medication side effects as well. क्योंकि जब ये होता है, जो जिनके मिनिमल सिम्टम्स हैं एक्सरबेशन के साथ आते हैं, दे गेट ट्रीटेड विद स्टीरॉइड्स. सो स्टीरॉइड, मल्टीपल कोर्सेज ऑफ स्टीरॉइड्स. नाउ रिसर्च हैज शोन दैट इवन 4 to 5 courses of steroid throughout the life, they can have long term side effect as well. So कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टीरॉइड की ज़रूरत ना पड़े. ट्रेडिशनली देयर हैव बीन 2 types of medicine, अलग-अलग, यानी अगर आपने कोई एस्थमेटिक देखा हो तो they usually have a brown inhaler and a blue inhaler. So blue is usually reliever, to relieve the symptoms, and brown is controller. Controller means long term they are using that inhaler to prevent the symptoms from happening. But now there is a change. Now there is anti-inflammatory reliever. Reliever usually have been a short acting bronchodilator जो कि immediate symptom relief में use होता है. Controller always have been a inhaled corticosteroid. But now there is a combination of anti-inflammatory reliever, ICS formoterol. Formoterol is a long acting beta agonist, LAPA, and salbutamol we all know, short acting beta agonist, SAPA. So how formoterol is better or different from salbutamol? Formoterol is number one long acting, but it is also rapid acting as well, similar to salbutamol. So, and the duration of action is up to 12 hours. For salbutamol it is 3 to 4 hours. So that is why it is suitable for both controller, maintenance and reliever therapy. यानी आप long term में भी use कर सकते हैं, and then you can use it for immediate relief as well. So अगर किसी ने पहले एज़मा की गाइडलाइन देखी है तो आपने ये देखा होगा कि यूजुअली इट इज़ अ स्टेप वाइज अप्रोच. पहले स्टेप में जिनको पेशेंट्स को इनफ्रीक्वेंट सिम्टम है, कभी कभार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है या कभी कभार सिम्टम होते हैं, तो ट्रेडिशनली दे वुड बी यूजिंग अ ब्लू इनहेलर साल्बुटामोल. बट नाउ व्हाट दिस इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रेफर्ड ट्रैक. देयर आर नाउ 2 tracks of treatment. So in steps 1 and 2 both, as needed low dose ICS formoterol combination is recommended. कि जब भी फॉर्मेट्रॉल यानी जब भी आपने ब्रोंकोडायलेटर लेना है तो साथ में ICS होना ज़रूरी है. क्योंकि जो अभी हमने बात की थी कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि
शॉर्ट एक्टिंग ट्रीटमेंट ले रहे थे लेकिन एग्जर्सर्बेशन हो रही थी। तो द मेन थिंग विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एग्जर्सर्बेशन इज ICS, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो अगर पेशेंट ICS नहीं ले रहा होगा तो दे विल ऑलवेज बी एट द रिस्क ऑफ हैविंग एग्जर्सर्बेशन, सडन एग्जर्सर्बेशन एंड इवन सडन डेथ्स एज वेल. So first two steps are these, and then if still the patient's symptoms are not controlled, we can move to next step, which is low dose maintenance ICS formoterol. Then the patient will start taking ICS formoterol combination on regular basis, once daily or twice daily. And on the next step, the dose of ICS will be increased further to medium dose. And then step 5 is for severe asthma, when the patient is still not controlled up till here and we need to go to high dose steroid, inhaled steroids, then that is step 5 treatment, and there are few other options there as well. Even agar salbutamol, if for some reason patient cannot use these first track, then we can go for second track as well, in which the salbutamol is included instead of formoterol, but this is not the preferable treatment now. Now, even the patient, if the patient is taking salbutamol, it is recommended that patient should take ICS along with salbutamol. They should not be taking salbutamol alone. Again, this is the same. इसका एक और फ़ायदा क्या है, ये जो formoterol and ICS combination है, this can be used in as maintenance and reliever therapy, which is called as MART or SMART, single inhaler maintenance and reliever therapy. तो पेशेंट विल हैव टू यूज़ ओनली वन इनहेलर. जो पहले होता था कि 2 इनहेलर रखे हुए हैं, एक रेगुलर यूज़ कर रहा है और एक क्विक रिलीफ के लिए यूज़ कर रहा है, वो ख़त्म हो गया है. एक इनहेलर है, एक डिवाइस है और उसकी सेम टेक्निक है, और पेशेंट खुद से स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है. व्हेन देयर आर मोर सिम्टम, पेशेंट कैन स्टेप अप द ट्रीटमेंट, टेक मोर डोजेज ऑफ द सेम इनहेलर, एंड व्हेन द symptoms are well controlled, the patient can step down by themselves as well. जी, formoterol and ICS, लाबा, formoterol is लाबा, तो उनका कॉम्बिनेशन है ना, तो दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. कलर हम बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो ब्लू और ब्राउन को फॉलो नहीं होता, तो पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के जो है ना, तो इसका कोई कलर होगा लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. मोस्ट कॉमन से इसका पिंक में आता है, जिसको हम फॉस्टर के नाम से मशहूर है. हाँ. हमारा एक ब्रांड है, तो वी यूज दैट. उसमें आते हैं. So why this change was made from salbutamol to formoterol? In 2019 this change was made, and research, what did research show? Research showed that there is 65% reduction in exacerbations if as needed ICS formoterol is used as compared to SABA. So 2/3 जो पेशेंट है ना उनमें इम्प्रूवमेंट देखी गई. एंड सिमिलरली इवन इफ़ यू कंपेयर ICS formoterol विद डेली ICS प्लस एज नीडेड SABA, जो कि हमारा ट्रैक 2 है, उसके मुकाबले में 37% बेटर है formoterol एंड ICS कॉम्बिनेशन. So that was the reason, and now there is rapid change all over the world in guidelines to include formoterol in the guideline and treatment of asthma. Inhaled corticosteroid, inhaled steroid, जो inhaler फॉर्म में steroid है. Very few side effects. Local side effect हो सकते हैं माउथ में, डिपेंडेंसी नहीं. ये जो एक मिथ है ना कि इनहेलर स्टार्ट कर दिया तो इनहेलर लग जाएगा, इनहेलर नहीं लगता. बेसिकली द डिजीज़ इज़ देयर, जो डिजीज़ है ना वो है, जब तक है फिर उस वक्त तक ट्रीटमेंट तो उसकी चाहिए. सो दिस इज़ अ मिथ के इनहेलर यूज़ हो गया, जिस तरह इंसुलिन की है कि इंसुलिन स्टार्ट कर दी तो वो लग जाएगी. सो इनहेलर का भी सेम है. सो इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन इनहेलर. सो ट्रीटमेंट जो स्टेप्स हैं उसमें लो डोज, वी स्टार्ट विद लो डोज स्टीरॉयड, मूव टू मीडियम डोज एंड देन हाई डोज. जो हमारे यहाँ मोस्टली अवेलेबल स्टीरॉयड्स हैं इनहेलर्स में, वो बैक्लोमिथासोन है या ब्यूटिसिनाइड है. जो DPIs मोस्टली यूज़ हो रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं, दे आर ब्यूटिसिनाइड बेस्ड. तो आपने भी देखा 400/6 या 400/12 या 200/6,
So if you use 200 BD, जो 200 वाला है वो BD में यूज़ करें, that is low dose. If you go to 400 BD, that will be medium dose. अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो that would be high dose. And जो MDIs हैं, MDIs means जो traditional inhalers हैं, so that can contain budesonide or beclomethasone as well. Mostly have beclomethasone. उसमें the dose is half than budesonide. And children में overall the dose is half as compared to adults. So severe asthma means when you have reached step 5 and the asthma is still not controlled. Okay, salmeterol is another long-acting beta agonist like formoterol, but its onset of action is slower, so it cannot be used similar to formoterol. So इसका जो आंसर था that is tiotropium. ये क्वेश्चन डालने की रीज़न ये थी कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट आया, पेशेंट को मॉडरेट सिम्टम है एंड यूजुअली वी स्टार्ट देम ऑन डबल इनहेलर. फॉर्मेट्रॉल भी स्टार्ट कर देते हैं एंड टायोट्रोपियम भी स्टार्ट कर देते हैं. टायोट्रोपियम इज़ लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटेगनिस्ट, जैसे शॉर्ट एक्टिंग में इप्राट्रोपियम है, एटम से जो हम नेबुलाइज करते हैं. सो टायोट्रोपियम इज़ लॉन्ग एक्टिंग बट इट इज़ रिजर्व फॉर स्टेप 5 ट्रीटमेंट ओनली फॉर सीवियर एजमा. So it should not be started right away. Like if patient has mild to moderate symptom, they should not be started on tiotropium. Formoterol is usually enough, and you can step up in formoterol. And then, if still they are not controlled, then you can include tiotropium. So step 5 में क्या क्या option है? Step 5 is last step. High dose ICS LABA combination you can use. लामा जो अभी हमने डिस्कस किया, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोनियम इज़ अनदर ऑप्शन. एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हमने शुरू में पैथोफिजियोलॉजी में देखा, सो दीज आर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच कैन बी यूज इन सीवियर एस्मा एंड दे हैव देयर ओन इंडिकेशंस डिपेंडिंग अपॉन IgE levels, depending upon eosinophil counts. Basically they are used in patients who have got high eosinophil counts, and they are reserved for severe asthma treatment. To prevent use of oral or IV steroids. And another thing which we can use is erythromycin 3 days a week. That is another option, because we do not have availability of most of these. Omalizumab may be available, लेकिन it's very difficult and very costly as well. So twice monthly you have to give the monoclonal antibody. I think last time it was 30 to 40,000, but अब तो शायद उससे भी ज़्यादा की होगी price. So but azithromycin obviously is available and is used like bunties, so it can be used here as well. But that would be long term, with a trial of 3 to 6 months and 3 times a week. On alternate day you can start with 250 milligram and then increase to 500 milligram if needed. And the rationale for azithromycin is to reduce the epidemic exacerbations, No. or does it have a role even without it? Yeah, so the main purpose is to use it as immunomodulator, as anti-inflammatory agent. So only 3.7% of asthmatics they have severe asthma. So only for this amount of this proportion of patients we need to go for step 5. Usually asthma is in 96-97% of patients, asthma should be controlled with formoterol and ICS combination. You can go to maximum dose of steroids which can be given. But why we see so many patients they do not have control of asthma? But usually there is problem with patient education
टेक्निक्स ठीक नहीं होती हैं पेशेंट की, या उनको बताया नहीं जाता कैसे यूज़ करना है और कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम जब हमें ज़रूरत होती है फिर यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे। दे शुड बी यूजिंग इट रेगुलरली इवन इफ़ दे डू नॉट हैव सिम्टम्स, क्योंकि हमारा एम ये है कि हम सिम्टम्स ना जाने दें बात। तो अगर कोई एस्थमेटिक है या पेशेंट से, तो आप लोगों ने सुना होगा इस्लामाबाद से इलाज कराना है, इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से। व्हाट इज़ दैट? कोई आइडिया है किसी को क्या होता है वहाँ पे? सो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि पेशेंट किस चीज़ से एलर्जिक है। तो फर्स्ट दे डू अ स्किन टेस्ट, जो कॉमन एलर्जन हैं, पोलन हो गए, डेंडर, हाउस डस्ट माइट और इस तरह की जो कॉमन एलर्जन्स हैं, दे डू अ स्किन टेस्ट टू फाइंड आउट टू विच एलर्जन द पेशेंट इज़ सेंसिटिव। और फिर उसी एलर्जन की थोड़ी थोड़ी डोजेज़ देना स्टार्ट कर देते हैं टू सेंसिटाइज द पेशेंट। अब वो डोजेज़ सबक्यूटेनियस भी दी जा सकती हैं एंड सब लिंगुअल भी दी जा सकती हैं। यूजुअली आई थिंक इन पाकिस्तान दे यूज़ सबक्यूटेनियस, and but that needs to be given over a prolonged period, at least 3 to 5 years for the patient to get any benefit, but still उसमें भी साथ में inhaled treatment is usually required. Montelukast अवॉइड भी कर सकता है मतलब, जी, अगर हो सकता है अवॉइड, अगर किया जा सकता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नट्स वगैरह से लोग जी बिल्कुल। So Montelukast, what do you think about this Montelukast? Again, another Bunty for Bunty. Bunty. Leukotriene inhibitor. बिल्कुल। अगर हम उसको जो हमने 2 ट्रैक्स देखे थे उसमें कहीं भी नहीं है मोटिलिकास्ट, वो तीसरा थर्ड ऑप्शन है अगर आप किसी वजह से बाकी चीज़ें ना यूज़ कर सकें या अवेलेबल ना हो, एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू ICS, एंड देयर आर कंसर्न फॉर न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स। FDA है आई थिंक इन 2021 रिलीज्ड अ बॉक्स वार्निंग के मैंडेटरी है कि मोटिलिकास्ट के कि आप उसमें वार्निंग दें अबाउट देयर न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स। सो जो भी पेशेंट अगर हमें इन्हेलर्स, हमारे यहाँ ये है ना कि इन्हेलर लग जाते हैं लेकिन मोटिलिकास्ट क्योंकि टैबलेट है इसलिए वो ले लें, बट सो देयर इज़ अ वार्निंग अगेंस्ट दैट। ओरल ब्रोंकोडायलेटर्स अगेन बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ लिए जाते हैं साल्ब्यूटामोल। जी, सुइसिडल थॉट्स और इवन सुसाइड्स, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ओके, साल्ब्यूटामोल टैबलेट सिरप अब विद टाइम इसका कम होता जा रहा है, लेकिन पहले बहुत फ्रीक्वेंटली अभी भी यूज़ होते हैं साल्ब्यूटामोल सिरप, खासतौर पे काफ़ी जो यूज़ होता है। ओरल थियोफाइलिन अगेन नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट्स एंड नॉट मच इफेक्टिवनेस एज कम्पेयर टू इनहेल ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें चिल्ड्रन में देर इज़ डिफरेंस। चिल्ड्रन में अभी तक ना फॉर्मेट्रॉल पे इतनी स्टडीज़ नहीं हैं, तो 11 ईयर से कम पे फॉर्मेट्रॉल यूज़ एज अ रिलीवर उस पर इतनी स्टडी नहीं है। तो अभी भी चिल्ड्रन में अभी भी साल्ब्यूटामोल रिकमेंडेड है, बट वेन एवर दे आर यूजिंग साल्ब्यूटामोल दे शुड बी यूजिंग ICS अलॉन्ग विद दैट, दे शुड नॉट बी यूजिंग साल्ब्यूटामोल अलॉन। एंड अगेन बाकी सेम है, आहिस्ता आहिस्ता आप स्टीरॉयड इज़ द मेन ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। एज वी डिस्कस द मेन प्रॉब्लम इज़ इन्फ्लेमेशन, तो स्टीरॉयड इज़ इम्पॉर्टेंट। There is no treatment of asthma without steroid. So with each step steroid dose will be increased gradually, and if still not controlled then biological agents. अब चिल्ड्रन जो लेस देन 5 years हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज इन एज़मा इन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 5 years old because they get frequent wheezing episode. Whenever they get any viral infection, they will get wheezing along with the viral infection, which will go away once the infection is resolved, and in between those infections they will be fine. So in patients में usually asthma diagnose करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पायरोमेट्री वो कर नहीं सकते,
तो उसमें रिकमेंडेड ये है, इफ़ दे आर हैविंग वेरी फ्रीक्वेंट एपिसोड्स यू कैन यूज़ इनहेल्ड स्टीरॉइड्स ड्यूरिंग दोज एपिसोड्स, बट and if needed, if the frequency is too high, then you can use them as the inhaled steroid as maintenance treatment as well. इसमें अभी तक है ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो मॉन्टिल्यूकास्ट, उसमें उन्होंने जो है ना फर्स्ट उस पर लिखा हुआ है ट्रैक में, बट अगेन यू हैव टू वार्न दैम अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स। लेस देन 5 ईयर्स में अभी तक फॉर्मेट्रॉल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें अभी इतनी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में सबने देखा होगा सीन, नहीं देखा होगा। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इन्हेलर टेक्निक, इन्हेलर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है लेकिन पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको यूज़ कैसे करना है, एंड दैट इज़ वेरी 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 कॉमन। पेशेंट आते हैं इस तरह भी हमने देखे इस तरह यूज़ करते हैं, वरना बाज़ दफ़ा जब पेशेंट दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट द इन्हेलर विद देयर ब्रेथ, क्योंकि जब तक लंग्स के अंदर नहीं मेडिसिन जाएगी तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। सो टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी डिवाइस उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। देयर विल बी सम पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू यूज़ मीटर डोज इन्हेलर बिकॉज ऑफ टेक्निक प्रॉब्लम, और उसमें बेस्ट है यूज अगर मीटर डोज इन्हेलर ही यूज़ करना है कि साथ में स्पेसर दें। सो अगर स्पेसर यूज़ कर रहे हैं साथ में तो इतना वो कोऑर्डिनेट करना मैंडेटरी नहीं है। ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसमें पेशेंट की एफर्ट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट जब खींचता है पाउडर को तो वो फिर अंदर जाता है। कुछ अब जैसे बच्चे नहीं इस ड्राई DPI यूज़ कर सकेंगे, इसी तरह वेरी एल्डरली पीपल हु आर वेरी ब्रेथलेस दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनफ फ्लो टू गेट द मेडिसिन इनटू द लंग्स, तो उसमें भी रिकमेंडेड नहीं है। तो मल्टीपल टाइम लोग ये भी कह देते हैं कि हमें ये कैप्सूल मिला हमने खा ली है, लेकिन यस, इट हैपन्स वेरी कॉमनली। मेरे पास एक पेशेंट आई and she had advice got this advice 8 years back, और वो कह रही थी कि मैं दवाई इस्तेमाल करती हूँ, मैंने कहा छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज बैरिटी के ऊपर बहुत कॉमन है, पेशेंट का इन्हेलर टेक्निक इज 0, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कैप्सूल है, तो उन्होंने पर्स से निकाला, तो मैंने कहा इसका प्रोफाइल है, देखिए वो क्या होता है। मैंने कहा आपके मतलब खा रही हूँ 8 साल से खा रही हूँ, वेरी कॉमन। शहर की बात है, कई पेशेंट इस तरह आते हैं जो कहते हैं कि वो खा रहे होते हैं कैप्सूल ना। जब इसका बेस्ट हल क्या है, कैसे ये ख़त्म किया जा सकता है कि आप एक दफ़ा पेशेंट से कहें कि एक दफ़ा करके दिखाएं आपके सामने, तो जब तक आप अपने सामने करवाएंगे नहीं पेशेंट को यूज़, वो टेक्निक ठीक नहीं होगी। मोस्टली हम इस तरह भी कहते हैं कि आप जहाँ स्टोर से लेंगे उनसे समझ लेना, वो भी मोस्टली गलत ही कर रहे होते हैं। और दूसरा, अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं है या पेशेंट नहीं लाया तो आप YouTube पे सर्च करें। YouTube पे अब तो सारी जो जितनी है वीडियोस मौजूद हैं कि कौन सी डिवाइस किस तरह यूज़ करनी है। सो इसमें चॉइस में आपको ये देखना चाहिए, सो यू शुड कंसीडर वेदर द पेशेंट विल बी एबल टू यूज़ इट और नॉट, और अफोर्डेबिलिटी अगेन यू शुड कंसीडर वाइल प्रिस्क्राइबिंग द डिवाइस एज वेल। इसमें एक जो है एज़मा एक्शन प्लान, हाउ टू इन्वॉल्व पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ देयर एज़मा। सो ये एक्शन प्लान होता है जिसमें एक यू कैन फिल आउट द फॉर्म, आप ज़बानी भी बता सकते हैं बट बेटर टू फिल आउट द फॉर्म, और ये अवेलेबल है। ये तो NHS का लिया हुआ है मैंने, लेकिन इसमें जो है ना कि यूजुअली नॉर्मल डेज में कैसे यूज़ करना है, और अगर सिम्टम उनकी वर्सनिंग हो रही है फिर क्या करना है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप पे आप ये कह सकते हैं कि अपने इन्हेलर की नंबर ऑफ़ डोजेज़ इंक्रीज़ कर दें, फिर भी सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे तो ओरल स्टीरॉइड ले लें, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहे तो फिर आप हॉस्पिटल में चले जाएं या नेबुलाइज़र यूज़ कर लें, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैड द सिम्टम्स आर। और इसमें इम्पॉर्टेंट है पीक एक्सपिरेटरी फ़्लो मॉनिटरिंग की।
because sometimes the patient are not able to, उसमें अगर पेशेंट को सिम्टम उतने सीवियर नहीं होते जितनी ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर होती है, तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो अगर पेशेंट मॉनिटर करता रहे, दैट गिव्स एन अर्ली आइडिया दैट द लंग फंक्शन इज अबाउट टू गो डाउन. So which of the following is your preferred initial treatment option for patient presenting with acute severe asthma in emergency basically? So you have to select one. Steroids. Yes, so nebulized salbutamol is the सबसे पहले salbutamol, Ventolin nebulization, salbutamol nebulization is the first treatment option. But now there is a trend of using ipratropium is fine. If ipratropium you can use with salbutamol, and when both are used together they have additive effect. But mostly we have seen that patients are not given salbutamol but they are given beclomethasone, steroid, nebulized steroid, Clenil, most commonly used. But if you are giving oral or IV steroid due to exacerbation, then this is of no use, the nebulized beclomethasone. It is only, it has shown to be beneficial only when there is no IV or oral steroids are being given. So we all know replace tachycardia, yes. So if salbutamol जो tachycardia है वो अगर cardiac cause की वजह से है तो फिर avoid करना चाहिए. Otherwise if tachycardia can be there due to respiratory causes as well, when patient is dyspneic he will be tachycardic as well, so that is not a contraindication to salbutamol. So step by step treatment: oxygen if needed, target 94 to 98, salbutamol, ipratropium nebulization. Salbutamol you can repeat every 20 minutes or even you can give continuous as well. Ipratropium again you can repeat every 1 hour, and steroid oral or IV. Inhaled alone can be beneficial when you are not giving oral or IV. Then magnesium sulfate, keep on monitoring expiratory flow rate and ABGs. ICU referral if patient is not improving after all of this. Pregnancy, asthma is common, exacerbations are common, mechanical effect due to diaphragm being pushed up, viral infections are again common, and sometime in pregnancy patients stop taking their treatment thinking that they will have adverse effects. But risk to mother and fetus due to exacerbation is more as compared to medicine side effect. So कोई भी जितनी भी जो main medicine है asthma के treatment में, they are not contraindicated during pregnancy. They can be used safely. And if there is exacerbation, it should be treated aggressively. Saturation should be kept more than 95% to prevent fetal hypoxia. Non-pharmacological strategies used, which are useful in all the respiratory diseases: smoking cessation, regular physical activity, pulmonary rehab, avoid exposures. If you come to know the triggers, then you should be avoiding them, and breathing exercises, weight reduction as well. So when someone is on treatment, how do you assess them? So usually follow-up is recommended initially at 1 to 3 months, and then once they are stable on treatment, then 6 to 12 months follow-up can be done. And how do we evaluate whether asthma is controlled or not? These 4 questions will tell you whether asthma is well controlled or not. Daytime symptoms more than twice per week, any night waking due to asthma, reliever needed more than twice per week, or any activity limitation due to asthma. If none of these, that means that asthma is well controlled. If 1 or 2 are present, partly controlled, and if 3 or 4, then uncontrolled. If it is well controlled, you can step down treatment after 3 months.
And if it is not, if it is partly controlled or uncontrolled, you will need to step up treatment. So ये अब तो I think this should be correct for everyone. So take home messages: use spirometry to diagnose asthma before treatment is started. Formoterol with ICS is preferable or current standard of treatment, and inhaled corticosteroids are backbone of asthma. There is no treatment of asthma without inhaled corticosteroid currently. So, any questions?